First case, really good case. Vijay was a deputy commissioner in a remote district of hilly northern state of the country for last 2 years. In the month of August, heavy rains lashed the complete state, followed by a cloudburst in upper reaches of the said district. Think of whatever is happening in Himachal or Uttarakhand right now. So Vijay was a deputy commissioner of a remote district of hilly state, and in month of August, heavy rains have lashed the complete state, followed by a cloudburst in upper reaches of the said district. The damage was very heavy in the complete state, especially in the affected district. The complete road network and telecommunication were disrupted, and the buildings were damaged extensively. Complete road network has been disrupted, communication has been disrupted, and the buildings were damaged extensively. People's houses have been destroyed, and they were forced to stay in open. More than 200 people have been killed, and about 5,000 were badly injured. The civil administration under Vijay got activated and started conducting rescue and relief operations. Temporary shelter camps and hospitals were established to provide shelter and medical facilities to homeless and injured people. Helicopter services were pressed in for evacuating sick and old people from remote areas. Vijay got a message from his hometown in Kerala that his mother was seriously sick. After 2 days, he received the unfortunate message that his mother has expired. Vijay has no close relative except one elder sister who was a US citizen and staying there for last several years. In the meantime, situation in the affected district deteriorated further due to resumption of heavy rains and after a gap of 5 days. At the same time, continuous messages were coming in on his mobile from his hometown to reach at the earliest for performing last rites of his mother. I'm sure case sabko samajh mein aa gaya hoga. What are the options available with Vijay? Ethical dilemma that he is facing. Critically evaluate each of these options identified by Vijay. Which option do you think would be most appropriate for Vijay to adopt and why? तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं कैसे हम इनका आंसर लिखेंगे. First, introduction part. In intro to your answers, I've said this in case study session also. In intro to our answers, what should be writing? We should be writing about, for example, is this thing reflective of some generic conflict that people at workplace are facing? या तो आप कोई जेनरिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पे लिखो, या फिर अगर आपको कुछ रियल इवेंट पता है इससे रिलेटेड आप उसके बारे में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अ वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट, देर आर मेनी इवेंट्स ऑफ सच सॉर्ट, बट हाँ, वन गुड इंट्रोडक्शन कैन बी यू राइट दैट सिविल सर्वेंट्स continuously face a conflict between their personal duties and their professional responsibilities. In most cases, these conflicts are relatively easily resolvable, as there would be ethical guidelines. I'll repeat, civil servants continuously face conflicts between personal duties and professional responsibilities. And in most cases, these conflicts are relatively easily resolvable as there are ethical guidelines of action. However, in some cases, these conflicts become extreme, where no one either personal or professional duty can be relatively easily preferred. This is one such case where the conflict is too extreme or too adverse for it to be resolved in a relatively easier manner using some rules and regulations only. यहाँ पे कोई rule regulation वगैरह नहीं चलेगा, because on one case you have a responsibility as son to perform last rites of your mother, and on other case you have responsibility towards the people as district magistrate, as district commissioner, कि आपको भाई उनको disaster में rescue करना है. So this is a case of extreme. So that is one way of writing introduction to this particular case. आप एक general देखो कि इधर लिख दो कि क्या conflict यहाँ पे आपको face हो रहा है. तो ultimately conflict is between personal duty and professional responsibility. If a case was conflict between a personal desire and professional responsibility, it would get resolved easily in favor of professional responsibility. अगर personal desire है versus professional responsibility है तो easily आप उसको duty के उसके में resolve कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक आपकी personal duty है और वो भी core very important duty है, तो यहाँ पे resolve करना इतना मुश्किल नहीं है. यहाँ पे कोई guideline नहीं है कि आप यहाँ पे क्या act करोगे. There are guidelines otherwise to help you get over that dilemma. But in this case, there is no such guideline that can be framed कि ऐसे में आप क्या करोगे. One way of writing the introduction. Another way, आप किसी event से relate कर सकते हो. For example, an event that comes to my mind very close to this particular event is that आप लिख सकते हो Sachin Tendulkar का example. So in 1999 World Cup, अब you people would not born at
that point, most of you were not born. 99 वर्ल्ड कप, इंडिया वॉज ऑन वर्ज ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो इंडिया बाहर होने वाली थी. एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट सचिन तेंदुलकर फादर पास्ड अवे. तुम्हारी जनरेशन जो विराट कोहली को पूछती है, विराट कोहली फादर पास्ड अवे. यस, सचिन तेंदुलकर फादर पास्ड अवे ड्यूरिंग इंडियाज वर्ल्ड कप. तो अभी जो फैन क्लब बने रहते हैं, तो अगेन समय हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज़ में डिवेट नहीं करेंगे. Sachin Tendulkar's greatness, as in it goes far beyond words, as in it goes far beyond statistics. His father passed away in 1999 World Cup when India was on verge of elimination. He came back, performed the last rites of his fathers, went back within 3 days and played for the country, ensured that we were not eliminated. During his absence, India lost that match. कीनिया के अगेंस्ट हमारा कुछ मैच था, हमने वो मैच हार भी गए थे. देन ही वेंट बैक, ही केम बैक एज इन विद इन 3 days आफ्टर परफॉर्मिंग लास्ट राइट्स एंड मेड श्योर दैट इंडिया वाज एबल टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज. अब इन दिस केस यहाँ पे पर्सन एक सिविल सर्वेंट है, वहाँ पे वो क्रिकेटर है, लेकिन हाँ बात ये ना कि सबकी अपनी अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वर्सेज एक वेरी पर्सनल ड्यूटी है आपकी. तो यू कैन गिव दैट इंट्रोडक्शन, दैट वुड बी अ वेरी सूटेबल इंट्रोडक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस. और एक इंट्रोडक्शन और है जो कि आप लिखना नहीं, बस एग्जाम्पल के तौर पर आई एम जस्ट गिविंग यू एज पार्ट ऑफ एग्जाम्पल. बॉर्डर मूवी देखी है? बॉर्डर अगेन तुम्हारे हिसाब से काफ़ी पुरानी मूवी हो चुकी है बॉर्डर. तो बॉर्डर मूवी में एक कैरेक्टर है, मथुरा दास का कैरेक्टर है. सो द कंट्री इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, कंट्री इज गोइंग थ्रू अ वॉर राइट नाउ. पाकिस्तानीज आर कमिंग एंड अटैकिंग ऑन आवर बॉर्डर. वी हैव वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स एट दैट चेक पोस्ट. एंड देयर इज अ पर्सन हुज वाइफ इज फेसिंग हैज कैंसर एंड इज ऑन हर डेथ बेड. So as a person, obviously he has a desire to go back to his wife and attend to his wife. Obviously बात है. But then as a professional, as in as a soldier, it is also a responsibility to protect the nation in that nation in its need of war. So what do you do in this particular case? Now he's asked for leave from the army headquarters. Army headquarters has been denying his leave because of the duty that he has to perform. But eventually they grant him the leave also, and then he's supposed to go back to his family. He goes back, अब फिर वो बाकी मूवी का पार्ट आ जाता है. But the point is, I'm just letting you know the dilemma that exists. There is a grave dilemma between your professional duty and personal responsibility. बहुत dilemma यहाँ पे चीज़ है. Important aspect क्या है? Important aspect ये है कि इस dilemma को resolve करने के लिए हमारे पास कुछ straight forward approach नहीं होती है कि हम कैसे इसको resolve कर दें. More importantly, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपको आंसर में ये चीज लिखनी होगी. ये बॉर्डर वाला मूवी का मत लिखना, बट आप ऐसे लिख सकते हो, अ सोल्जर ऑन बॉर्डर में फेस अ ग्रेव पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टाइम्स ऑफ वॉर. सो शुड ही कम बैक और शुड नॉट, शुड ही स्टे एंड परफॉर्म हिज नेशनल ड्यूटी एट दैट पॉइंट. ऐसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो. सबको समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखेंगे हम आंसर के अंदर. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज this is a problem that a person faces and we as external agents are in no position to be judgmental of his resolution. ये लिखना पड़ेगा आपको आंसर में. हम जज नहीं कर सकते हैं. You can't judge. None of us is in that position. We can't judge कि उसने सही काम किया कि गलत काम किया. वो कुछ भी करे उसको सब कुछ अलाउड है करना. वो अपनी मदर की लास्ट राइट परफॉर्म करने जाए, वो वहां पे रुके, उसको सब कुछ अलाउड है करना. हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं. लिखना पड़ेगा आपको आंसर के अंदर. इन इंट्रोडक्शन सेट दिस स्टोन, राइट, दैट इट वुड बी रॉन्ग ऑफ अस टू जज अ पर्सन्स एक्शन बेस्ड ऑन आवर मॉरल असेसमेंट. Why? Because it is the person that is in this situation and is facing this critical dilemma. Given this grave situation, these are the following options available with Vijay. Is this clear to everybody? कैसे हमको स्टार्ट करना है? आंसर समझ में आ गया? जजमेंटल हमको आगे भी नहीं होना है. Which option do you think would be most appropriate वगैरह आप बताओगे कि क्या कर सकता है, लेकिन अगेन आप एम्फेसाइज करोगे वहां पे कि I will not judge if he chooses the other action. Clear to everyone? ये लिखना आंसर में इस चीज को. दिस इज वॉट शोज मैच्योरिटी ऑन योर पार्ट, दैट यू आर नॉट मेयरली अ पर्सन हु हैज रिटन ऑप्शंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स एज इन प्रोज एंड कॉन्स, एंड अब आप लिख देते हो कि भाई क्या चीज करनी चाहिए. यू हैव टू रिफ्लेक्ट दैट यू आर बेटर दैन, मोर मैच्योर दैन अदर्स हु आर राइटिंग द आंसर. इट्स अ रिलेटिव असेसमेंट ऑफ एवरीबॉडी. You have to prove that you are better than others, and this sentence prove that you are better than others in the sense you recognize that वो एक person की unique problem है, वो उस situation में आप नहीं हो, तो आप बाहर से बैठे उसको जज नहीं कर सकते हो. आप ज्ञान नहीं दे सकते हो कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? ओके, क्या ऑप्शन है विजय के पास? गिवन दिस difficult problem, given this challenging situation, the options with Vijay are as follows. Prefer or prioritize
rescue operations, prioritize rescue operation, and attend to his personal responsibility as soon as he can. देखो लिखने का तरीका है, अगर आपने ये लिख दिया कि प्रायोरिटाइज रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड डोंट गो टू हिज फैमिली वर्सेस प्रायोरिटाइज रेस्क्यू ऑपरेशन एंड अटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सून एज ही कैन. अब एज सून एज ही कैन में आपने बता दिया ना कि भाई यहां जैसे ही मैं कर सकता हूं उस समय मैं करूंगा. लिखने का तरीका है. दिस इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स मैच्योरिटी इन पार्ट ऑफ द आंसर. ठीक है, ओके. दिस इज वन ऑप्शन, प्रायोरिटाइज रेस्क्यू ऑपरेशंस. सेकंड इज perform last rites with full, क्या लिखा था यहाँ पे, perform last, okay, perform last rites commensurate with cultural requirements, cultural or religious requirements. And the third is delegate the duty to some competent entity for 2 to 3 days. These are the options that Vijay basically has. Clear है? या तो आप रुक जाओगे, या आप जाओगे, या फिर आप 2 से 3 दिन के लिए डेलीगेट कर दोगे. आपको बेसिकली ये काम करना है. क्या ऑप्शन लेंगे हम? व्हाट ऑप्शन आर वी गोइंग टू चूज? क्या लेना चाहिए बताओ? अगेन वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि हमको क्या ऑप्शन चूज करना है. ऑल ऑप्शंस आर राइट ऑप्शंस, राइट? अगर वो विजय साहब रुकना चाहते हैं वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल परफॉर्म करने के लिए, गुड, पीपल विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट, बट अगेन ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट केस. इफ ही वांट्स टू गो बैक, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट देन ही मस्ट हैव सम प्लान ऑफ एक्शन, सम कुछ प्लान भी होना चाहिए कि भाई किस तरीके से वो डेलीगेट करेंगे. या फिर वो 2-3 दिन के लिए देखें भाई आई एम गोइंग टू सेट अप ऑल दीज टास्क फॉर नेक्स्ट 2-3 days एंड दीज आर गोइंग टू हैपन ऑटोमेटिकली, देन आई विल बी बैक विद इन दीज 3 days एंड हेंस आई कैन रिज्यूम द रेस्क्यू ऑपरेशंस. दीज आर 3 ऑप्शन दैट विजय हैज इन दिस पर्टिकुलर केस. इज इट क्लियर? सो ऑप्शंस अवेलेबल. Ethical dilemmas being faced by Vijay. This is the more important question. What are the ethical dilemmas that he is facing? Ethical dilemmas. अब there are many ethical dilemmas, but how do you write? कैसे present कर सकते हैं हम इसको? Again, a better ways. One is आप ethical dilemma ऐसे लिख सकते हो that it is, let's say, honesty versus integrity, objectivity, personal versus professional. आप ऐसे लिख सकते हो. That is one way of presenting ethical dilemma. A better way can be, in this particular case, a better way can be to present ethical dilemma is, क्या dilemma है? जैसे आपने लिखना है, मान लेते हैं पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल आपको लिखना है. पर्सनल ड्यूटी वर्सेस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अगर ये लिखना है तो वन वे ऑफ राइटिंग दिस डायलेमा इज दैट यू कैन राइट हाउ डज ही डेलीगेट the professional duty to someone else. How does he delegate the duty? Question mark. How does he ensure? How does he reach his hometown and come back on time given that transportation is difficult? How does he ensure
that no mishappening takes place in his absence. Would he be held responsible for any incident that takes place in his absence? I'll read out, समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या लिखा है, मैं तुमको पढ़ के बता देता हूँ. हाँ सुमत. Dilemmas that he is facing. Write the dilemmas in question form. That is what I am trying to portray. एग्जाम में जब आंसर लिख रहे हो तो इस तरीके से आंसर लिखो, इन क्वेश्चन फॉर्म. Dilemmas. Dilemma is I am thinking what would happen, what am I going to do, what may not happen. That is what is affecting my decision making right now. I am grappling with all these dimensions at the same time. I have to go back. To whom do I delegate my responsibility? Is there a competent person or not? How will I go back? I am going to use resources that are meant for rescue of people. मैं खुद हेलीकॉप्टर के अंदर जाऊंगा, कहीं पे अगर मेरे को जाना होगा तो यहाँ से किसी स्टेशन तक जाऊंगा, एयरपोर्ट तक जाऊंगा, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा. What kind of resources am I going to use if I have to go back? Because transportation possible नहीं है यहाँ पे. How am I going to make sure that no untoward incidents happen in my absence? And if something happens, will I be held responsible for that or not? How will I settle how will I resolve that crisis of conscience? अगर मैं चला जाऊंगा, आप रिवर्स में देखो इस चीज को. अभी तो लग रहा है कि चला जाना चाहिए मेरे को क्योंकि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा. लेकिन अगर 2 दिन में कुछ हो जाता है तो मेरी कॉन्शियस में मेरे को चोट मेरे को खुद आएगी. एज इन आई वुड बी थिंकिंग दैट am I responsible for this thing or not? As in, it's not just about responsibility, accountability wali baat. I would myself think that maybe I could have stayed, I should have stayed. My presence would have been far more beneficial. Let me be heartless for a moment. My presence would have been far more beneficial for the alive as compared to the diseased. The diseased is my mother, but my presence is required more for those who are alive right now, those who could have been rescued. So then I would be grappling with that crisis of conscience. So that is the dilemma that I am facing. So write the dilemmas in these questions from the dilemma that that Vijay is facing in this case. So don't write in that conventional form all the time कि भैया dilemma is honesty versus integrity, dilemma is personal versus professional. इस तरीके से आप dilemma लिख सकते हो और ये better तरीका है मेरे ख्याल से dilemma लिखने का. In question form, that what would happen if this is going to happen. So इस type से हम लिखेंगे dilemmas. ठीक है, समझ में आया सबको? That is the dilemma that Rajesh is facing. Critically evaluate and examine each of these options identified by Vijay. इन सब का evaluation करेंगे, इनके merit demerit हमको लिखने हैं. Prioritize rescue. I'm sure everybody can write merit and demerit of this particular thing. The merit is that it reflects professional responsibility. Merit में ये मत लिखना that if I am let's say staying, that if I am staying तो people will be rescued. ये नहीं लिखेंगे merit में. मैं stay कर रहा हूँ जिससे लोग बचे रहें, जिससे मैं rescue operation में contribute कर सकूँ. ये merit नहीं है इस चीज़ की. Merit क्या है? If I am staying, then this reflects my commitment to professional responsibility. I will be able to perform my duties which should result in people being rescued. सबको समझ में आया क्या? Merit हम कैसे लिखेंगे? Merit is that if I am staying, if I am prioritizing rescue operation, this reflects on my commitment to my duty. ये इसकी merit है. Demerit क्या है? That as a son I would have failed in my duties to perform last rites of my mother. ये इसकी demerit है. Demerit में ये मत लिखना, demerit ये है कि मैं नहीं जा पाया. डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या कर दिया इसका मतलब डीमेरिट में क्या नहीं हो पाए, क्या नहीं किया, ये नहीं डीमेरिट है. डीमेरिट इज दैट I am unable to perform my duties as a son to perform last rites for my mother. Is this clear? That is how you are going to analyze these options. Second option, perform last rite commensurate with the cultural or religious, in complete religious manner. Merit is an important performance, in an important duty of every son or every child is to perform the last rites of their parents. A very important duty, and as a result of that, why I have been given values, I have grown on to become quote unquote some big person. Why should I not perform the last rites of the mother? So merit is that I am able to uphold my duties as a son. But the demerit in this case would be that some untoward incidents may happen. My presence in rescue room would be very, very important. And if I am not present, maybe the disaster rescue operations may fail,
or may get jeopardized for next 2 or 3 days till the time I'm not present over there. That becomes the demerit of this particular option. For 2 or 3 days अगर आप जाते हो delegate to somebody else, to some competent entity, the merit is I would have minimized my absence, and as a result, I would have shown leadership in delegating responsibilities when required. Minimize my absence, show leadership that I can delegate my responsibilities when required. Preparedness एक important part है ना भाई, you have to be prepared for anything that can go wrong, and anything that can go wrong के अंदर your personal life may also go wrong at some point. It's not just that I have to be prepared for disaster. अगर इस टाइम मान लेते हैं मुख्यमंत्री को कुछ हो जाता है, maybe I may be required at that to tend to his duties towards him as well. Maybe something untoward happens somewhere else, as in जो कि प्रोफेशनल ड्यूटी का पार्ट है. पॉइंट इज मेरे को सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्क. So if I am able to delegate my responsibility to somebody else during such times, it shows my preparedness to handle different kinds of risk. ये इसकी merit है. Demerit क्या है? That it creates uncertainty. It creates crisis of conscience. It creates a situation where there may be lack of accountability. That if something happens in these 3 days when I am not present, who will be held accountable? Me or the person to whom duty was delegated to? That becomes the demerit of this particular thing. ठीक है, clear है? That is how you analyze these options. Finally, which option do you think would be most appropriate for Vijay to adopt and why? यहाँ पे emphasize करेंगे जैसे मैंने पहले बोला था. This is a situation where it's not easy to resolve the dilemma. And whatever option Vijay takes, all those options would be very personal to him, may be justified using some means. पहले part में आप लिख दो, पहले point में आप लिख दो कि Vijay is completely free to take any of these actions. We will not be judgmental कि विजय ने सही क्या गलत किया. Then उसके बाद लिखो according to me. आपको पूछा गया कि भी क्या ऑप्शन लेना चाहिए. According to me, the most appropriate option may be, किसी को भी पिक करो, उसको जस्टिफाई कर दो, किसी को भी पिक करो. You want to write that Vijay should stay, आपको ये लिखना है तो आप लिख दो that according to me, Vijay, the best option would be if Vijay decides to stay, because utilitarian calculation are in favor of this particular option. More number of lives will be saved if Vijay is present over here performing his professional duties. So therefore, according to utilitarian principle, Vijay's presence is required, he must stay. That would be a desirable course of action. तो आप कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन लिख रहे हो, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको कि आप क्यों बोल रहे हो दैट दिस इज अ डिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन. You can write, according to me, Vijay should perform his duties, can delegate the responsibility for 3 days, and hence come back as soon as possible and join his duties back. By doing this, he would have performed his duties as son also by minimizing his absence. तो आप इस पॉइंट को भी जस्टिफाई कर सकते हो. पॉइंट इज पिक अप एनी ऑप्शन, यू हैव टू जस्टिफाई दैट ऑप्शन कि भाई क्यों आप चाहते हो कि विजय काम करे. आपसे ये तो पूछा गया, इनमें से आपसे पूछा गया विच ऑप्शन डू यू थिंक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट. मोस्ट अप्रोप्रिएट है भाई आपके अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएट है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और अप्रोप्रिएट हो सकता है. कोर्स ऑफ एक्शन डज नॉट मैटर, याद रखना इस चीज को. द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू चूज डज नॉट मैटर. एग्जामिनर को लगता है आपको पता है कि क्या सही करना चाहिए इसके अंदर. एग्जामिनर कौन होता है आपको जज करने वाला भाई? जो प्रोफेसर साहब कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेक करते करते उनके घर के अंदर कुछ हो जाए, फिर नहीं होना चाहिए. गेट दिस पॉइंट और नॉट? Nobody can judge. Understand this thing. There is a person who is in a situation, no one else can judge that person's action. You are giving your opinion that according to you, what may have been a preferable course of action. Is this clear to every? सबको समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को emphasize करना बार बार that it would be wrong for us as external entities to judge Vijay's action. Given the complex dilemma that he is facing, he should be able to take decision, and whatever decision he takes, we should be respectful of that decision. In our opinion, Vijay should stay because his presence would be necessary to carry out rescue operations and the grave disaster that the state is facing. According to me, this should be the option. Or you want to write, according to me, Vijay should take immediate leave, perform last rites, come back within 3 days. During this time, he can delegate responsibilities to somebody else from the state, some competent entity, for example, some district commissioner from neighboring district or some other district.
Before leaving, he must prepare an exact plan. He must leave an emergency contact number for himself so that if there is some requirement, he can be contacted. He must make sure that he comes back within 3 days, as in as less time as possible, to take back his responsibilities. Clear to everybody? सबको समझ में आ गया? ऐसे हम आंसर लिखेंगे इसका. जो भी आपने कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया है उसके बाद लास्ट में लिखो, बाय डूइंग दिस ही वुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड करेज, लीडरशिप, कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. Is this clear? लास्ट लाइन हमको ये लिखनी है, by doing this he would have demonstrated all these values. Clear है? सबको समझ में आ गया? एक और चीज लिख देना यहाँ पे कि whatever he decision he takes, he must transparently disclose that decision. भाई डिसीजन अगर वो ले रहा है कुछ तो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोज भी करे, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, पीपल को बता देना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है. पीपल, जनता ढूंढ रही है कमिश्नर साहब कहाँ चले गए, लोग बोल रहे हैं कमिश्नर छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं. अगर बोल दिए छुट्टी के ऊपर गए तो फिर गलत मैसेज चला जाएगा ना. इसलिए आपको पहले ही ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना है दैट देयर इज अ पर्सनल इमरजेंसी एंड यू हैव गॉन देयर टू अटेंड दैट इमरजेंसी. सो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट भी लिख देना कि व्हाट इज द ऑप्शन दैट यू शुड टेक. यू शुड ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर व्हाटएवर wherever he is required right now.